Hello students, let's begin stanza number 4. That will be the last stanza of this poem. Unless governor, teacher, inspector, visitor, this man becomes, dear students. In this stanza, the poet is hopeful. He says that the governor, teacher, inspector, and a person who comes here as a visitor can save the lives of these poor children. Unless this map becomes their window, which map? That is hanging on the wall. The poet says that it is the duty of these people who are in power, who governor, teacher, okay, they can save the lives of the children, and they can make this map the window of the children, and through these windows they can see what is happening in the outside world. And these windows that shut upon means capture their lives, like catacombs, a place where the dead bodies are buried, जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता है ना, तहखाना catacombs होता है. And these windows, which windows? Classroom windows. These windows have captured their lives just like catacombs. Break open till they break the town. So again the poet requests the person who are in power to break these windows, otherwise they will break the town, and show the children green fields and make their world run azure. Azure underline करें, and azure means sky blue color, but in this poem azure stands for sky, SKY. On gold sands वही जो एक गोल्डन कलर का जो सैंड है, रेत है. सो हेयर गोल्ड सैंड्स स्टैंड्स फॉर ब्यूटीफुल अर्थ. एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स. सो व्हाट डज द पोएट मीन टू से? एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स. एंड the poet says that it is the accountability of these people who are in power कि वो इन बच्चों को ग्रीन फील्ड्स दिखाएं, ठीक है, और मेक देयर वर्ल्ड रन एजोर ऑन गोल्ड सैंड्स, ताकि ये जो बच्चे हैं ये दे कैन फील द ब्यूटीफुल अर्थ अंडर द ब्लू स्काई. Okay, it is the duty of these people to let these children move out from the town so that they can feel the beauty outside, and let their tongues run naked into books. Again, it is the responsibility of these people to provide the poor children education, कि वो इन बच्चों को एजुकेशन दे. let their टंग्स मीन्स जीभ होती है जो, रन वो जीभ दौड़े, नेकेड फ्रीली, इनटू बुक्स के ऊपर, ठीक है, सो दैट दे कैन स्टडी. उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी दिए जाएं सो दैट दे कैन स्टडी. द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन. वाइट लीव्स मीन्स सफ़ेद पन्ने, बुक्स. ग्रीन लीव्स जो ग्रीनरी है, ठीक है, दैट इज स्टैंड फॉर ग्रीनरी. ओपन कि वो खुले में ना पढ़ सकें, ग्रीन जो ग्रीनरी है उसके कांटेक्ट में आए. तो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ दिस पीपल. हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन. सन मीन्स सन स्टैंड्स फॉर करेज. तो हियर द पोएट वांट्स टू से दैट ओनली दोज पर्सन क्रिएट हिस्ट्री हु आर करेजियस. ओके, जिन व्यक्तियों के पास करेज है, साहस है, they can leave their mark on the earth. Okay, so students, this was the explanation of the last stanza, and now check the figure of speech or poetic device as in the third line, like catacombs. Okay, like catacombs. Here simile figure of speech has been used. Break and show the children run azure on gold sands. Gold sands stands for beautiful earth, metaphor. Figure of speech has been used.
and let their tongues run. Students, in these two lines, run and run, the same word has been repeated in the starting of the sentences. When this type of things happen, जब इस प्रकार से वर्ड्स आपके एक ही वर्ड और वो रिपीट हो जाए दो लाइन्स में, वहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज़ कॉल्ड एनाफोरा, ANAPHORA, एनाफोरा. तो एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड हियर. एंड इन द लास्ट sentence, history there, whose language is the sun, in this sentence metaphor figure of speech has been used, metaphor. Okay, thanks students.